Hi. In this video, we'll be discussing all the GATE 2025 problems जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ रही है कि कैसे सॉल्व हो रहा है और द क्वेश्चंस विच आर वर्थ रेजिंग कि उनका आंसर गलत है तो विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स. Okay, so let's start with question number 34. Problem is regarding option A. ये option is given to be correct in the answer key. The with regards to national income accounting, the statement is कि GDP is sum of all factor payments. ये NCERT का एक statement है and it's generally taken to be correct. एक so it is in general correct, but अगर आप इसकी टेक्निकलिटी में जाते हो and if you want to understand this, what happens is कि अगर आप इनकम मेथड देखो, so इनकम मेथड से निकल कर आता है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जहां पर आप सारी फैक्टर इनकम्स ऐड करते हो लाइक वेजेस, बेसिकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसके अंदर वेजेस और मील्स जो भी एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीजें. देन यू ऐड ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट इंटरेस्ट ये सब चीजें आ जाती हैं एंड यू ऐड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये सब जो फैक्टर इनकम्स होती हैं आप ऐड करते हो एंड कंफ्यूजन है कि इससे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आता है और यहाँ पर तो बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीडीपी इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स. तो जब आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तब आपको जीडीपी मिलता है. व्हेन यू ऐड डेप्रिसिएशन टू एनडीपीएफसी तब आप जीडीपी पर पहुंचोगे. ओके, सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि जो यहाँ पर आप इनकम वाया प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज जो भी आप अर्न करने वाले हो, दैट मे बी प्रॉफिट. ओके, सो वो आपको मिल रही है बाय यूजिंग द मशीनरीज, जो भी जो कैपिटल आप यूज कर रहे हो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती है. ठीक है, सो उसको अकाउंट में लेना जरूरी है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो फैक्टर पेमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है दैट कैन बी ग्रॉस फैक्टर पेमेंट्स एज वेल एज नेट फैक्टर पेमेंट्स. ओके, सो इफ दैट इज ग्रॉस विच मीन्स इसके अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो देन दैट्स अ ग्रॉस फैक्टर पेमेंट. और अगर आप उसमें डेप्रिसिएशन नहीं रखते हो तो दैट दैट गिव्स यू नेट फैक्टर पेमेंट्स. ओके, सो अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस. ठीक है, सो ए ए अगर उन्होंने गेट के आंसर की में ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट गिवन है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस. सो आई वुड से कि इट इज नॉट वर्थ रेजिंग. ओके, लेट्स क्विकली चेक आउट ऑप्शन बी एंड सी एंड डी एज वेल. So option B is NDP is equal to GDP. तो ग्रॉस है, ग्रॉस में जब आप डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप नेट पर आ जाते हो. दैट्स ऑल्सो करेक्ट. व्हाट अबाउट सी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP इज इक्वल टू जीडीपी. ठीक है, तो जीडीपी हियर इट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हियर इट इज national product. So you need to add NFI, net factor income from abroad, so which is given a plus net income from abroad. So that is also fine. Let's check option D. NNP is equal to GNP. So gross से आपको net पर पहुंचना, so you need to subtract depreciation. Rather यहाँ पर आपको given है minus GDP, which is incorrect. Okay, so all A, B, C options are correct और आंसर की में भी यही given. ओके, मूविंग ऑन. अगला क्वेश्चन जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ रही है और दिस इज वर्थ रेजिंग. क्वेश्चन इज कि
ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट्स आर व्यूड एज। तो ट्रांसफर पेमेंट, पहले वर्ड समझ लेते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स मींस दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स, जिसके बदले में आपको कोई गुड या सर्विसेज नहीं मिली है। ठीक है। सो गवर्नमेंट जो, और ये प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को। ओके। सो इन दैट केस, सो थिंग्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये गवर्नमेंट देती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है पर्सन और उसने कोई सर्विस नहीं दी है। पेंशन इज समथिंग जो गवर्नमेंट देती है, बट दैट्स नॉट ट्रांसफर, बिकॉज उस पर्सन ने काफी सालों तक काम किया है, उसके बदले में पेंशन दी जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट। ओके। और इसे नेगेटिव टैक्स भी कहते हैं। तो बेसिकली वैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो अगर आप लिखो बोलो नेगेटिव पे टैक्सेस, तो दैट इज समथिंग जो गवर्नमेंट आगे लोगों को पे करती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, इसके अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आता है। ओके। ठीक है। और इसके अलावा नेगेटिव टैक्सेस में ये भी आता है कि अगर आप कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लो इनकम इंडिविजुअल्स को देर इज सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन सो दैट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मेंटेन्ड, तो वो भी नेगेटिव टैक्सेस होते हैं। सो दीज कम अंडर ट्रांसफर पेमेंट। सो दीज कैन बी पेमेंट एज वेल एज वेल्थ। तो लोग गूगल कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि ट्रांसफर पेमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ भी आता है। ठीक है। सो बेसिकली कंफ्यूजन आ रहा है इस टर्म को लेकर के कि ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, वेल द थिंग इज दिस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इज समथिंग डन बाय प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली कंज्यूमर्स, हम जैसे लोग आपस में करते हैं, लाइक कि आप अपने बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन को आप वेल्थ ट्रांसफर कर दो, दैट इज नॉट समथिंग डन बाय गवर्नमेंट। तो द कीवर्ड हियर इज गवर्नमेंट। ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, दैट्स नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। ओके। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर सो थिंग्स लाइक, जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो थिंग्स लाइक लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट बैंक से आप लोन लेते हो, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, दैट बिकम्स द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट विच इज अ नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो दिस इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। ओके। एंड तो बेसिकली कंफ्यूजन यहाँ पर है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ तो वो गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है। और गवर्नमेंट का पूछा हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। ओके। सो आंसर गिवन बाय, इन द आंसर की इज ए ओनली, विच इज करेक्ट। मूविंग ऑन। ओके। Here you are given that let x1, x2, x3 be independent and identically distributed random variables with expectation of x1 equal to mu. Expectation of x1 is equal to mu. Okay. Let n be a positive integer valued uh, random variable. Okay. It takes positive integer values with expectation of n equal to small n. Okay. Then you are given this a new random variable Sn, which is the sum of random variables x1, x2 up till xn. And the thing to notice here is कि n अपने आप में खुद एक रैंडम वेरिएबल ही है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो जो यहाँ पर ऐड हुए हैं, दिस इज नॉट समथिंग फिक्स्ड। ठीक है। दैट्स द थिंग, ये फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन एन। तो एन हो सकता है यहाँ पर 5 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो, इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन कर सकते हो, देन दैट कैन नॉट बी डन। रीजन बीइंग कि एन इज इटसेल्फ अ रैंडम वेरिएबल, और अगर रैंडम वेरिएबल है तो आपको कंडीशन करना पड़ेगा। ओके। तो लेट मी शो यू आप सॉल्व कैसे करोगे।
जो पहले आप इनकरेक्ट है वो मैं आपको दिखा दूं. Incorrect method would be expectation, or you will take expectation both sides. So expectation of x1 plus x using linearity, expectation of x2 up till आप कर दोगे expectation of xn. Okay, so which will give you expectation of x1 is mu up till mu, और यहाँ पे आपको लग रहा है ये n है, तो ये आ जाएगा n mu. But the issue is कि this n is a random variable, it's not fixed. जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो यू शुड गेट अ फिक्स नंबर. तो दिस इज अ वेरिएबल. ओके, सो इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. दैट्स व्हाई बी इज इनकरेक्ट. ओके, नाउ हाउ विल यू एक्चुअली सॉल्व दिस? एस एन, या, so Sn is equal to x1 plus x2 up till xn. आपको करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन, because n is a random variable. Okay, see how. So ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन गिवन एन इक्वल टू स्मॉल एन. इसे वॉल्ट्स इक्वेशन कहते हैं. सो यू नीड टू यूज दिस. ओके, बेसिकली you are conditioning on n. Okay, so this will be equal to expectation of x1 given n is equal to small n, and so on till expectation of xn given n is equal to small n. Okay, so that gives you expectation of n mu, which is ultimately equal to small n times mu. Okay, so this is going to be equal to small n mu rather than capital N mu. So answer is C and not B. Okay. If you don't get this कि ये कैसे हुआ, तो basically the idea here is कि यहाँ ये जो sum है of these random variables, it is not these are not a fixed number of random variables जो add हो रहे हैं. Okay, so when this depends upon some variable. Okay, in that case, let me show you the shorter version of Walt's equation. Walt's identity भी कहते हैं इसे. See, so the sum of random number n of IID random variables x1 x2 up till, मतलब आपको नहीं पता कि वो कितने नंबर्स हैं. इन दैट केस अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स वेर यू डोंट नो कि एन, जहां पे आपको पता है कि दिस इज नॉट फिक्स्ड, इन दैट केस इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1. सबका सारे एक्साइज का मीन एक्सपेक्टेशन सेम होगा बिकॉज दीज आर IIDs. ओके, सबकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है एंड ऑल ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट. सो इन आवर केस, if you want to find out this, it is simply going to be equal to expectation of n into expectation of x1, so which is equal to n into mu. So that's why option C is correct. Okay, so at your level you can just remember this, or use कब होगा जब this n is itself a random variable. Okay, moving on. Yeah, question number 52. A simple Keynesian open economy model is given by S plus T plus M is equal to X plus I plus
जी प्लस आई प्लस एक्स। तो यहाँ पर सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स, एक तरफ है आपके पास लीकेजेस और दूसरी तरफ है आपके पास जी प्लस आई प्लस एक्स, विच आर दी इंजेक्शंस। ओके, तो government expenditure, investment and exports. Okay, if the country has trade surplus, ठीक है, अभी कंट्री जो है ट्रेड सरप्लस में, दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट्स, यानी एक्स माइनस एम इज पॉजिटिव। ओके, which strategy or strategies among the following will reduce the trade imbalance? तो अभी trade balance is when trade is in balance when x is equal to m। तो करंटली सरप्लस में है, तो इफ यू वांट टू रिड्यूस द सरप्लस तो क्या स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है? ओके, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, सो सी दिस, आपके पास है एस प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू जी प्लस आई प्लस एक्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा यहाँ पर? यूजिंग दिस व्हाट वी कैन राइट इज एक्स माइनस एम is equal to, if I take this m here, s minus I plus t minus g। ठीक है, सो दिस t minus g, तो t is basically government's revenue and g is expenditure, so this is government saving है, public saving हो गया, this is private saving, and this is domestic investments, okay, investments। All right, so we want to reduce this, x minus m is something positive, this is trade surplus, अभी surplus में currently x minus m is something positive, we need to reduce this। So let's see the options, क्या क्या strategy use कर सकते हैं? Decrease in private saving, so if you decrease this then obviously this will reduce, so it will reduce trade surplus, that's correct। Okay, everything else being constant, increase in investment would reduce trade surplus। ये नेगेटिव टर्म है यहाँ पर, तो इफ यू increase I, then right hand side will reduce, so that means x minus m will reduce, so that's also correct। इन्वेस्टमेंट अगर आप इंक्रीज करते हो then that would reduce net exports according to this equation, so b is also correct। increase गवर्नमेंट टैक्सेस, ओके, तो अगर टैक्सेस को इंक्रीज करोगे तो x minus m is rather increasing, so that's incorrect। We need to reduce, not increase। And lastly, decrease in government spending. So if you reduce this negative term, so that would rather increase x minus m. We need to reduce x minus m. So that's also incorrect. That's why A and B are correct options. Okay, moving on. Okay, consider two scenarios for open economy based Mundell-Fleming IS-LM model with फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ओके, सिनेरियो वन, सी डिपेंडिंग अपॉन डिस्पोजेबल इनकम, आई डिपेंडिंग अपॉन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, ओके, जी नेट एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज डिपेंडिंग अपॉन बोथ exchange rate as well as Y income, okay, aggregate income। And here IS की इक्वेशन में इट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो डिफरेंसेस दोनों सिनेरियोज में IS में यहाँ पर है, एंड हियर फिक्स्ड प्राइस लिया हुआ है, P बार है, maybe it is just general price level, okay, so let's not assume things।
ओके है P is fixed. Fine. P bar is fixed. Okay. So in scenario one, it depends upon world interest rate as well as aggregate income, and here it depends upon disposable income. That's y minus taxes. तो एक डिफरेंस यहाँ पर है. ओके. नाउ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन बोथ ई एंड वाई. तो जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं एक्सचेंज रेट और वाई दोनों के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है. नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. वाई इज डोमेस्टिक इनकम. सो अगर वाई इज हायर तो दैट लीड्स टू हायर इंपोर्ट्स. अगर आपकी इनकम ज्यादा देन जो इस मॉडल में होता है कि आप यू ट्राई टू इंपोर्ट मोर. आपके पास इनकम है इंपोर्ट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई. ओके. एंड एक्सचेंज रेट के साथ भी नेगेटिवली रिलेटेड है. सो अगर एक्सचेंज रेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है देन दैट इज लीडिंग टू इधर एक्सपोर्टिंग मोर और इंपोर्टिंग. इट इज नेगेटिवली रिलेटेड. ओके. सो नेट एक्सपोर्ट्स तो अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा देन एक्सपोर्ट्स आर इधर रिड्यूसिंग और इंपोर्ट्स आर इधर और इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग. तो एक्सपोर्ट्स आप डिक्रीज कब करते हो व्हेन योर करेंसी depreciates. Okay, so that means यहाँ पर ई इंक्रीज होना मीन्स डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होना, सॉरी डेप्रिशिएट होना. व्हेन योर करेंसी डेप्रिशिएट आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है. इन दैट केस आप एक्सपोर्ट कम कर पाते हो. व्हेन योर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है. तो इन दैट केस रादर यू वुड एक्सपोर्ट मोर बिकॉज बाहर वालों के लिए द फॉरेन कंट्रीज के लिए आपकी करेंसी you they'll be able to afford more. So not depreciate, this should be appreciate. Yeah. तभी आप इंपोर्ट ज्यादा करें. या ओके. सो डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है. ओके. गिवन द अबव इंफॉर्मेशन. Correct. Increase in G has no effect on scenario one. Decrease in T lowers expansionary fiscal policy, raises income in scenario one and two. Expansionary fiscal policy raises exchange rate. Okay, let's check all the options one by. Option A is कि increase in G has no effect on income in scenario one. ठीक है. ये that's what happens, right? कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट केस में जो आपका फिस्कल पॉलिसी होती है दैट्स इनइफेक्टिव. तो जी फॉर अगर जी इंक्रीज होगा देन आई एस कर विल शिफ्ट राइट. दिस आई एस वन, दिस इज आई एस टू, दिस इज एल एम. ओके. तो जी में इंक्रीज हुआ है सो आई एस कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट गया. एंड व्हेन दैट हैपेंस सी नेट एक्सपोर्ट जो है वो वाई पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो आप ये देख लो या फिर व्हाट यू कैन डू इज इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज नाउ हायर देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट. Here we have I equal to IF. Now the new I is ग्रेटर देन द फॉरेन इंटरेस्ट रेट. तो कैपिटल इनफ्लोज होंगे. कैपिटल इनफ्लोज होंगे तो आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक कंट्री इन आवर कंट्री. ओके. सो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा और एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से आर एक्सपोर्ट्स विल फॉल. ओके. एंड दूसरा है यहाँ पर वाई भी है. वाई इंक्रीज होगा तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो फॉल होंगे. ओके. सो ओवरऑल दिस IS curve gets back to its original position and there is no effect. तो ये is correct. ठीक है.
decrease in T lowers income in scenario 2. It seems like कि how is it possible, but जो हमने देखा था दूसरा डिफरेंस वो यहाँ पर है, ये रहा। ओके, तो जो एल एम कर्व है वो इस बार इफेक्ट अफेक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। ओके, सिनारियो 2 देखते हैं। LM1, IS1, this is I equal to IF line, perfect capital mobility है, here we have Y, here we have I। इनिशियली आपके टैक्सेस रिड्यूस हुए, सो IS कर्व शिफ्ट टू द राइट, फिजिकल एक्सपेंशन हो गया ये एक, IS2। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर LM के लिए आपको गिवन है M/P बार इज इक्वल टू मनी डिमांड के लिए वी हैव, इट डिपेंड्स अपॉन R एंड it depends upon R star, which is world interest rate, and Y minus T. Okay. It depends upon R star and Y minus T. सी, जो हमारे पास इक्वेशन होती है मनी डिमांड के लिए, दैट्स KY माइनस HI। इस बार वो Y पर नहीं, वो यहाँ जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है इन जनरल KY माइनस HI, यहाँ पर आपके पास इस बार इनकम पर नहीं, वो डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स मेक इट KY माइनस T माइनस HI। ठीक है, चेंजेस यहाँ पर है, taxes have fallen down, so your disposable income has increased। Okay, so that should lead to a increase in money demand। money demand increase हो रही है, ये रहा money supply, here we have money demand। money demand जो है वो increase हो रही है, so y में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, there is no change in y, and for each given level of y I has increased। आई इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। ओके, तो आई इंक्रीज हो रहा है, सो ड्यू टू विच इसका इम्पैक्ट आएगा LM कर्व पर। सो इंक्रीज इन मनी डिमांड का जो यहाँ पर इम्पैक्ट आने वाला है LM कर्व पर, फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ वाई आई हैज इंक्रीज, सो इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। किसी भी गिवन लेवल ऑफ वाई के लिए आई इज मोर, I1, I2, सो जो LM कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर LM गया लेफ्टवर्ड। ओके, LM चला गया लेफ्टवर्ड, और आपका IS वापस आ जाएगा, वो हम देख चुके हैं। सो IS विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, LM जा चुका है वहां पर, अल्टीमेटली वी आर हेयर। पुराना IS कर्व, नया LM कर्व टुगेदर वाई लोअर हो जाएगा, तो दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, थर्ड इज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रेजेस इनकम इन सिनारियो 1 एंड सिनारियो 2, सो दैट्स रॉन्ग बिकॉज टैक्सेस रिड्यूस होना भी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है, सिनारियो 2 में उल्टा इनकम कम हो रही है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रेजेस एक्सचेंज रेट इन सिनारियो 1 एंड 2, रेजेस मतलब अप्रिशिएट होना, जो कि हो रहा है, दोनों में ही होगा। ठीक है, तो A B D आर करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। Consider a two-person exchange economy where two goods X and Y are available in limited quantities of 50 and 100 respectively. The preferences of the two persons, Anil and Binod, are given by the utility functions. If they decide to share Y equally among themselves, the amount of X Anil receives is कितना आएगा? ठीक है, okay, so it's a pure exchange economy। एक्स और वाई की टोटल क्वांटिटीज गिवन है, यानी ओमेगा एक्स इन टोटल इज 50, ओमेगा एंडाउमेंट्स, ओमेगा वाई इज 100। ठीक है,
इफ दे रिसीव इक्वल, दोनों के पास गुड वाई है जो इक्वल जाने वाला, तो 50-50 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज, तो यूटिलिटी तो वो मैक्सिमाइज करेंगे. ओके. ओके, लेट्स सी, सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन इज क्वाइट वियर्ड बिकॉज इन्होंने ना बताया है कि पैरेटो एफिशिएंसी में निकालना है या कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में निकालना है. However, if we talk about Pareto efficiency, then there can be multiple answers because once you fix y, because यहाँ पर बोला है they are sharing good y equally. So if y a equal to y b, अनिल और विनोद के लिए y a y b अगर 50 हो गया, which is 100 by 2, then after fixing that, दोनों की जो यूटिलिटी दैट्स इंक्रीजिंग इन x. तो अगर आप इफ यू गिव मोर एक्स, more of good x to Anil, then Binod gets worse off, and same thing goes for Binod. If you give more of x to Binod, then Anil gets worse off. Then in that case, any number between 0 and 50 uh, would be Pareto efficient. Okay, so there is no one single answer for that. तो और जो आंसर गिवन है, दैट्स 40 here. So if they are giving a single answer, then that won't be Pareto efficiency, because in that case any number between 0 and 50 would be Pareto efficient. Okay, so if we move towards competitive equilibrium, then in that case MRS आप इक्वेट करना चाहोगे, MRS of Anil should be equal to MRS of Binod. यहाँ से शुरू करते हैं. And here endowment of x with Anil plus endowment of x with Binod is total is equal to 50. Okay. This will be equal to MRS, यहाँ से आ जाएगा. Here it will be 0.4 upon 0.6. It will be 0.4 upon 0.6 into y by x. Here it will be 0.6 upon 0.4 into y by x. Okay, वो mu x upon mu y करके आप कर सकते हो. So here it is 0.4, 0.6, here it is 0.6, 0.4. Okay, so that gives us 2 by 3. Y is fixed at 50. This is YA, XA, YB, XB. That's fixed at 50 upon XA, equal to 3 by 2. That's fixed at 50 upon, we can write it to be 50 minus XA. So this gets cancelled out. 4 upon 9 equal to XA upon 50 minus XA. So that gives us 200 minus 4XA equal to 9XA. So that gives us 13XA equal to 200. So that gives us XA equal to 200 upon 13. And if you calculate this, then this is 15.3846 something. Okay, so which is not 40. So this question is something जो आप challenge कर सकते हो. Question number 58. इसका आंसर 40 I guess नहीं होना चाहिए. Okay, moving on. Question number 59. Let Y be income, R be interest rate, government expenditure, M as money supply, general price level P bar, ISLM की equations हैं. Y is equal to 490 plus 0.6y minus 4R plus G, and it is LM के लिए M by P equal to 20 plus 0.25y minus 10R. G is 330. Real money supply is 500. Then the equilibrium of Y. That's what you need to find out. Let's see this.
Well, this one is quite direct. उसका आंसर भी सही है. So all you need to do is you need to take both the equations and solve them simultaneously. That's it. So that will give you 2024. Okay, it will give you 2024, and that's correct. So let's skip this one. लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है. लेट्स सी दिस. इंस्टॉलेशन कॉस्ट है सोलर पावर प्लांट की 89,000. तो दैट द व्हाट यू पे अपफ्रंट. ओके. द प्लांट शैल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years. कॉस्ट है हर साल की 5,000. तो हेयर वी हैव दिस 5,000. बेनिफिट है every year 25,000 का. ओके. But these benefits and these costs are will be occurring in future. और हमें इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो आज एस्टिमेट करनी है. तो वी नीड टू डिस्काउंट these their value. Basically we need to find the present values of these benefits and costs. Okay. So here net benefit would be 25 minus 5, so which is 20. So that's 20 for each of these years. And what we need to do is that this 20, this will be discounted. और यहाँ पर जो discount rate, that's 4%. So 1 plus 0.04 to the power 1 plus 20 upon 1 plus 0.04 to the power 2 and so on 50 year तक के लिए to the power 5. Okay, that's what we need to do for net present value. And इसमें subtract होगा इनिशियल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जो आपने अपफ्रंट पे किया है. उसे डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ये इनिशियली पे कर दिया था. ओके, नॉट इन फ्यूचर. तो -89,000 फॉर दैट. और ये जो वैल्यूज है ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने दी हुई है आपको. दीज आर दी डिस्काउंट फैक्टर्स. सो दिस इज 0.96 into 20. This is 0.92 into 20 and so on till 0.82 into 20. What we can do is we can take this 20 common and add these discount factors. Okay, so let me do that. 0.96 plus 0.92 plus 0.89 plus 0.85 plus 0.82. That's 4.44. And if I multiply with that with 20, then that is giving us 88.8. Okay. So this is basically, this is in thousands. So this is equal to 88800. ठीक है. इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे 89,000. So that gives us -200. Okay. And that's how you solve this question. And this is also given in the answer key as well. Okay, so only question that you have to challenge is this one, 58. And all others, I guess, जो हमने consider करें, they are correct.